आज मैं आपको एक इस फोटो एडिटिंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं ये फोटो किस तरह एडिट करता हूँ। मैं सबसे पहले इस फोटो को लाइटरूम में एडिट करना चाहता हूँ। अगर प्रीसेट लगता है तो मैं उस पर लगाऊंगा, बगैर प्रीसेट की भी लगा सकता हूँ। देखो मैं इसका बैकग्राउंड किस तरह चेंज करता हूँ। अब मैं सबसे पहले लाइटरूम पर मैंने फोटो को शेयर कर दिया है। अब देखो कि मैं फोटो को किस तरह साफ करता हूँ। इसका पीछे से बैकग्राउंड भी चेंज कर लेता हूँ। इसका पीछे से बैकग्राउंड बिल्कुल मैं ब्लर करता हूँ। देखो मैं अब प्रीसेट लगाना चाहता हूँ कि कौन सा वाला चाहिए। जो मुझे अच्छा लगा तो मैं वो वाला लगाऊंगा, वो प्रीसेट। अब इस लाइटरूम को देखते रहो। अब मैं ये फोटो स्केचबुक पर शेयर करता हूँ। स्केचबुक पर मैंने शेयर कर दिया गया। अब मैं इसका ही वाला ब्रश लगाऊंगा। जब ये ब्रश आपकी चेहरे से ये दाग, काले वाला दाग ख़त्म कर देगा। अब इसका दाढ़ी भी बहुत अच्छा मैं इसमें बनाऊंगा स्केचबुक में। स्केचबुक में मैं आपको सब तरीका बताऊंगा। आप हमारी इस वीडियो के देखो और आगे शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो अब मैं जब इसके चेहरे पर ये दाग है तो मैं इसको बिल्कुल मिटाऊंगा। फिर इसका दाढ़ी किस तरह बनाऊंगा, आप देखो हमारे इस वीडियो को।
शेयर करता हूँ स्नैपसीड ये पत्ते वाला निशान आपने देखा होगा। अब मैं इसके चेहरे को वाइट करता हूँ और पीछे से बैकग्राउंड को भी अच्छा बनाऊंगा। आप देखो तो मैं किस तरह बनाऊंगा, मैं आपको ये सब तरीका बताऊंगा। देखो अब इस लकीरों को देखो कि मैं इस तरह एडिट करना चाहता हूँ।